Hello, all the students. Welcome once again to Ace Cat. And today, students, we people are going to have a discussion on sentence elimination. Yesterday, students, we discussed para summary, and today we are going to have a discussion on sentence elimination. जिसे commonly हम लोग कहते हैं odd one out. My name is Anil Sir, and for the last 20 years almost, I have been training the students for CAT and especially for VARC section. And students, when we talk about reading comprehension, when we talk about verbal ability, whichever pattern of question is there in CAT, ultimately each and every question is based on reading. So you people don't have a choice. You will have to read. So my suggestion to everyone, embrace reading. Don't hate it. Don't dislike it. Just accept it. When you love something, the chances of success there will always be high. So don't do something just for the sake of doing. What is more important is give your heart in that. So next almost 2 months and a half, you people should focus on cat only and give heart to cat. केवल माइंड से काम नहीं चलेगा, उस एग्जाम के साथ थोड़ा सा हाथ से भी अटैच होना पड़ेगा. तो एनीवे स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्बल एबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न पर डिस्कशन करेंगे. एंड आई बिलीव दैट कल वाली जो क्लास हमने ली थी पैरा समरी, दैट वुड हैव डेफिनेटली हेल्प द स्टूडेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग how to compare the various options and give the correct answer. Okay. And today, students, when we are going to discuss sentence elimination, so this becomes one such pattern. You people very well know where 5 sentences are given to us, and among those, 4 sentences will make a logical paragraph, and 1 sentence will be odd one out. So our job is to find out which is that odd one. And moreover, students, this is a pattern of CAT. So definitely, you will not have such very simple questions where 4 sentences will be talking about football and 1 sentence will be about cricket. इतना आसान तो क्वेश्चन होगा नहीं. So all the 5 sentences will be definitely talking about football only. They will seem to be one and the same, talking about the same thing and is of the same theme. But थोड़ा सा आप अगर डिटेल में जाकर उसको एक्सप्लोर करोगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाकर when you will start analyzing, you will realize that थोड़ा सा आउट ऑफ द सिंक कोई ना कोई सेंटेंस जरूर होगा. But yes, it becomes a tough job to find out which is the odd one out, because all the 5 sentences, they seem to be almost talking in one direction. But slightly जो difference होता है उसे identify करना is the key to success. चलिए, all the students who have come live, good, welcome to Age Cat. And जो बच्चे बाद में इसको एक वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे, प्लीज इंश्योर दैट इस पूरे वीडियो को वॉच करना. I'll make you solve around 5 questions with me, and before that हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करते हैं सेंटेंस एलिमिनेशन में, हाउ वी पीपल कैन बूस्ट आवर एक्यूरेसी. Coming on the very first thing, look for the theme of the paragraph. Odd one out is often a paragraph formation question in disguise. Students, अब देखो अल्टीमेटली हमें करना क्या है. 5 sentences में we need to identify the odd one. तो जो बच्चे पे 4 sentences हैं, they will actually logically fit into a paragraph. So this actually becomes a question of para jumble only in disguise. तो हमेशा थीम पर फोकस करो. Try to understand what is the theme of the paragraph. Once you understand the theme of the paragraph, identifying the odd one out will become easy for you. So try to find the central idea or common theme among the sentences. एक बहुत अच्छा टिप है, practical tip. Ask yourself, if I had to write a paragraph with 4 of these lines, which 4 would I choose? तो स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे तो वैसे भी ऑड वन आउट पता चल ही जाएगा. हालांकि मैं जानता हूं इट इज बेटर सेड देन डन. बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना मे नॉट बी सो इजी. Coming on the second one, check for logical and chronological flow. Now, this is something which is very important. Once you understand the chronology of the sentences, it will become easy for us. आपको एक्चुअली पता चलेगा ये 4 sentences आपस में फिट होते हैं. And moreover, students, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, if 4 statements talk about the causes of climate change and one gives a solution, that is likely the odd one. So you people do understand, यहाँ पर 5 sentences climate change के बारे में ही होंगे, बट ऐसा हो सकता है कि 4 sentences उसके causes पर बात करें और एक sentence ऐसा होगा जो बेसिकली उसके solution पर बात करेगा, उसके implication पर बात करेगा. So that is the reason हमें ये identify करना है. 5 sentences होंगे climate change के बारे में, बट अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखोगे तो you will be able to get the correct answer. So students, do understand
we need to understand the theme and we need to understand the chronology and the flow of the sentences. Just hold on, अभी कुछ बहुत interesting cat level questions मैं करने वाला हूँ, and while solving the questions I will give you some practical tips how you people can identify which answer is correct. So coming on the next one, find the opening sentence. Often you can identify the opening sentence and that sense the tone or the theme. स्टूडेंट्स आप देखोगे किसी भी पैराग्राफ में जो ओपनिंग सेंटेंस होता है वो हमेशा टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है. अच्छा, मैंने हमेशा देखा है बच्चे इवन इफ द आंसर इज नॉट करेक्ट बट एटलीस्ट ओपनिंग सेंटेंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली. तो मेरा सजेशन होगा सभी स्टूडेंट्स को, आफ्टर रीडिंग ऑल द 5 sentences you try to identify from where to begin. Once you are able to decide from where to begin, I guess understanding the tone and the theme will become easy for us. बट अगर स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी. चलिए, कमिंग ऑन द फोर्थ वन, यूज ट्रांजिशन वर्ड्स टू योर एडवांटेज. However, therefore, thus, for example, in contrast, and at the same time, जो बहुत सारे प्रोनाउंस अपन यूज करते हैं, ये ट्रांजिशन वर्ड्स भी स्टूडेंट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं to identify the odd one out and to arrange the sentences in a paragraph. तो ट्रांजिशन वर्ड्स अपने आप में बहुत हेल्प करेंगे. कैसे? We are going to take the questions now. एक बहुत अच्छा अप्रोच which you people should always keep in mind. Look for specific versus general sentences. If 4 are general statements and 1 is a specific case or example, so that specific one might be the odd one out. स्टूडेंट समझना, कई बार ऐसा होता है 4 बड़े स्पेसिफिक है और एक बहुत जनरल. और कई बार स्टूडेंट्स आप देखोगे जो स्टार्टिंग सेंटेंस है वो जेनरिक होता है, बट जैसे जैसे आप मूव करते हो वैसे वैसे सेंटेंस और स्पेसिफिक हो जाता है. तो एनीवे, आई विल नॉट से दैट क्वेश्चन इतना सिंपल आएगा कि 4 जनरल होंगे और एक स्पेसिफिक, बट फिर भी ये आउटलुक आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. यू ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड which sentence is a general assertion and which sentence becomes a specific example of that. Coming on the 6th one, practice quick elimination method. Now see, quick elimination method. If one sentence doesn't form a pair or group with any other, flag it. यहाँ पर एक बहुत अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप लोग है ना कम से कम 2 सेंटेंसेस में आपस में लिंक करना स्टार्ट करो. तो जब आप 2 सेंटेंसेस में लिंक करना स्टार्ट करोगे तो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट टू आइडेंटिफाई व्हिच इज द ऑड वन. अगर 2 सेंटेंसेस आपस में जेल होते हैं तो यस, देखिए जो जेल नहीं हो पाएगा दैट बिकम्स द ऑड वन आउट. तो दीज आर सम प्रैक्टिकल टिप्स, इन्हें हम लोग ध्यान में रखेंगे. बट एनीवे, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका जो गट फील है, आपका जो इंट्यूजन है, उसका भी अपना इंपॉर्टेंस है. एंड स्टूडेंट्स डू अंडरस्टैंड, किसी भी पैटर्न पर मास्टरी करनी हो उसके कम से कम 100 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है. कीप अ टारगेट. In case sentence elimination is not your forte, it is always advisable 100 questions अगले almost 10-15 days में. If you try solving of sentence elimination, you will see like your accuracy, your speed, everything will get a boost. When you solve 100 questions, आप देखोगे इसका जो पूरा पैटर्न है and what things you people are looking for and actually gets stored in the subconscious mind. और एक बार अगर कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए उसके बाद आप देखोगे स्टूडेंट्स कुछ भी हो जाए वो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप रिस्पॉन्ड करेगा एंड स्टूडेंट्स राइट टाइम पर आपको राइट इनसाइट जरूर देगा. ठीक उसी तरह से जैसे हमें गाड़ी चलाना आता है, अब गाड़ी चलाना हैज एक्चुअली गॉट इनटू द सबकॉन्शियस माइंड एंड दैट इज द रीजन हम देखते हैं कि कई सारे लोग मोबाइल पर बात भी करते हैं तो भी गाड़ी चलती रहती है. और कई बार हम लोग आपस में बहुत कैजुअली वी कीप टॉकिंग बट स्टिल वी आर ड्राइविंग एंड राइट टाइम पर स्टूडेंट्स ब्रेक भी लग जाता है. क्यों? बिकॉज ये पूरी जो आर्ट है, ये जो पूरी स्किल है, इट हैज एक्चुअली गॉन इन द सबकॉन्शियस माइंड. अब सोचो स्टूडेंट्स 10 साल हमने गाड़ी नहीं चलाई तो क्या आप गाड़ी चलाना भूलोगे? बिल्कुल नहीं. इसी तरह से स्टूडेंट्स खूब सारा आरसी सॉल्व करना, जब हम कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट इज नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, इट हैज अ साइंटिफिक इम्प्लीकेशन ऑल्सो. तो बस सबकॉन्शियस माइंड में लेकर जाने का एक ही तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. कमिंग ऑन, yes, CAT 2026, we people have started with the new batches and CAT 25 को लेकर we do have multiple variants of test series. तो 499 से स्टार्ट होकर 1499 तक काफी सारे टेस्ट सीरीज के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं
We urge all the students to explore the various courses available. And CAT 2026, the new batch we are going to start day after tomorrow on 13th. And today students, it is 11 September, बहुत ही स्पेशल डे है हिस्ट्री में. चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. This becomes the first question. सबसे पहला पावर टिप, without any bias, read all the 5 sentences. Okay, and students कोशिश करो बिना पैराग्राफ बनाए, are you able to identify the odd one out or not? But in case if it is not possible, then invest some time in making the paragraph. But कोशिश करो कि बिना पैराग्राफ के we can identify the odd one out. If you are able to do it, that is going to save your time as well. Yes, everyone, जो भी बच्चे लाइव हैं, try to give the answer. And जो बच्चे बाद में देखेंगे, प्लीज इंश्योर दैट आप पॉज करके सबसे पहले खुद क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड आफ्टर दैट यू लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन. Shall we take it now? Done? चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना. Yes, if anyone wants to give the answer, do let me know. Yes. So when you read all the 5 sentences, चलो मेरे साथ एक बार इसको पढ़ लो. Urbanites also have more and better options for getting around. Uber is ubiquitous, easy to rent, dockless bicycles are spreading, battery-powered scooters will be next. So urbanites also have more and better options for getting around. When more people use buses or trains, the service usually improves because public transport agencies run more buses and trains. Third, worsening services on public transport. Terrorist attacks in some urban metros and the rise in fares have been blamed for this trend. Students, अब आप देखो this trend, तो मैं कौन से trend की बात कर रहा हूँ? Fourth, it seems more likely that public transport is being squeezed structurally as people's need to travel is diminishing as a result of smartphones, video conferencing, online shopping, and so on. Fifth, there has been a puzzling decline. So when I say puzzling decline, that means we are not able to understand logically why this decline is taking place. So there has been a puzzling decline in the use of urban public transport in many countries in the West, despite the growth in urban populations and rising employment. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स अगर इन 5 सेंटेंसेस को अपन पढ़ें, फिफ्थ शुड बी द स्टार्टिंग वन. व्हाई फिफ्थ इज द स्टार्टिंग वन? बिकॉज ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है. ये बताता है कि इस पूरे पैराग्राफ में हम मेजरली डिस्कस क्या कर रहे हैं. वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन. जबकि अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बट फिर भी डिक्लाइन हो रहा है यूसेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. So what is the reason of that? So we are here to discuss that. तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है 5 से पैराग्राफ को स्टार्ट करना बिल्कुल ठीक होगा. अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स 5 के बाद कौन सा नेक्स्ट सेंटेंस आना चाहिए? आई वांट योर ओपिनियन. 5 के बाद स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए? यस. So now we people are going to discuss the possible reasons. तो अगर मैं 5 के बाद 3 लेता हूँ, ठीक है, worsening services on public transport, terrorist attacks in some urban metros and the rise in fares have been blamed for this trend. स्टूडेंट जब मैं ट्रेंड की बात करता हूँ दिस ट्रेंड, तो ये ट्रेंड कहाँ दे रखा है? फिफ्थ में. तो ये दिस ट्रेंड रेफर करता है द डिक्लाइन इन द यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो 5 और 3 का कॉम्बिनेशन एब्सोल्युटली परफेक्ट है. अब इसके बाद क्या होना चाहिए? कैन एनीवन गिव द आंसर? यस, कम ऑन एवरीवन. जो भी लाइव हैं, और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे, अच्छा कल 11:30 पर वी पीपल आर गोइंग टू ज्वाइन to discuss some very important questions and the strategies to crack SNAP and NMAT. तो कल की जो इंग्लिश होगी वो बेसिकली SNAP और NMAT से रिलेटेड होगी. अंडरस्टैंड? चलिए, सो नाउ 5-3. अब इसके बाद क्या होना चाहिए? यस यस यस. अच्छा चलो मुझे बताओ, इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द ऑर्डर, कैन यू पीपल गेस व्हिच इज द ऑड वन आउट? स्टूडेंट्स मुझे लगता है ऑड वन आउट को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है ही नहीं. अंडरस्टैंड? देखो, फोर्थ क्या कहता है? इट सीम्स मोर लाइकली दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज बीइंग स्क्वीज्ड structurally as people's need to travel is diminishing. So fourth is also giving one reason why the usage has come down. And one कहता है students urbanites also have more better options. तो आप देखोगे स्टूडेंट्स फर्स्ट में भी हम कहीं ना कहीं रीजन डिस्कस कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कम क्यों हो रहा है. जबकि स्टूडेंट जब मैं सेकंड की बात करता हूँ, but more people use buses or trains, the service usually improves
because public transport agencies run more buses and the trains. हम तो स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि इसका यूज कम क्यों हो रहा है. अब उसके बीच में सेकेंड ऑप्शन ये कहता है when more people use buses and trains, service improves. जबकि this is not the main theme of the paragraph. The second sentence is a mismatch and thus becomes the odd one out. So the main purpose of the paragraph is to discuss why there is a decline in the use of public transport, whereas second talks about in case of more people use buses and trains, the service improves. So that becomes slightly out of sync, but definitely students, the correct odd one out is the second one. Okay, और इसका पूरा ऑर्डर क्या होना चाहिए? So it becomes 5, 3, 4, 1. I guess you people agree? Done? तो जो भी स्टूडेंट्स लाइव हैं अगर कमेंट करके बताएंगे कि सर वी एग्री विद दिस आंसर और नॉट, तो इंटरेक्शन होगा तो और मजा आएगा. चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. Yes, question number 2. Read all the 5 sentences and decide which is the odd one. और इस बार कोशिश करो स्टूडेंट्स की बिना पैराग्राफ बनाए. You are able to find out which is the odd one. Just to see the flow of each and every sentence. The first one, self-care particularly links to loneliness, behavioral problems and negative academic outcomes. Self-care. Second कहता है latchkey children refers to children who routinely return home from school to empty homes and take care of themselves for extended periods of time. Latchkey children. Third आता है students, although self-care generally points to negative outcomes, it is important to consider that the bulk of research has yet to track long-term consequences. Okay. Fourth कहता है in research and practice, the phrase children in self-care has come to replace latchkey in an effort to more accurately reflect the nature of their circumstances. Fifth, although parents might believe that self-care would be beneficial for development, recent research has found quite the opposite. Anyway, students, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं children in self-care, जिन्हें कॉमनली पहले बोला जाता था लाचकी चिल्ड्रन. इसका मतलब है ऐसे बच्चे जो स्कूल से घर आते हैं बट बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग तो उन्हें घर पर कोई मिलता नहीं है. अंडरस्टैंड? ओके, तो कैन यू पीपल टेल मी व्हिच इज द ऑड वन एंड इफ यू वांट यू कैन मेक द कंप्लीट सीक्वेंस आल्सो. अच्छा मुझे बताओ ये पूरा पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? फ्रॉम वेयर वी नीड टू बिगिन? यस यस यस. या तो स्टार्टिंग सेंटेंस पता करो या फिर स्टूडेंट्स आप हर सेंटेंस का टोन देखो. आप देखो सेकेंड लाचकी चिल्ड्रन रिफर्स टू, तो एक चीज तो क्लियर है, सेकेंड विल बी देयर इन दिस पैराग्राफ बिकॉज दैट टॉक्स अबाउट अल्टीमेटली ये लाचकी चिल्ड्रन है कौन. रिफर्स टू चिल्ड्रन हु रूटीनली रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल टू एम्प्टी होम्स एंड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम. So that actually is an important sentence. इसके बिना इस पूरे पैराग्राफ को समझना may not be easy. One कहता है self care particularly links to loneliness, behavioral problems and negative academic outcomes. So it actually talks about the negative side of self care. हो सकता है starting one से भी start हो जाए. हम बात कर रहे हैं in general self care के बारे में और फिर उसी assertion को we are applying on latchkey children and we are trying to understand कि इन बच्चों पर इसका क्या असर होता है. अंडरस्टैंड? अब कहते हैं सेल्फ केयर पर्टिकुलरली लिंक्स टू लोनलीनेस. अब इसके बाद स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट लाचकी चिल्ड्रन. अब इसके बाद थर्ड वन, ऑल्दो सेल्फ केयर जनरली पॉइंट्स टू नेगेटिव आउटकम्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दैट द बल्क ऑफ रिसर्च हैज येट टू ट्रैक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. थर्ड तो इनफैक्ट ये कहता है कि चलो मान भी लेते हैं कि जनरली हम नेगेटिव आउटकम्स मानकर चल रहे हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दैट द बल्क ऑफ रिसर्च हैज येट टू ट्रैक long-term consequences. Now you people try to understand. Third is not majorly talking about the negative effects of self-care. It is not talking about कि latchkey children किस तरह की problems face करते हैं. ये तो इनफैक्ट ये कहता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अभी रिसर्च होना बाकी है. ओके, बट एनीवे इवन दिस इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ केयर. तो देखते हैं
थर्ड, डायरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है. Fourth, in research and practice, the phrase children and self-care has come to replace latchkey in an effort to more accurately reflect the nature of their circumstances. अब स्टूडेंट्स आप देखोगे ये सेल्फ केयर की बात करता है, ये लाचकी की, एंड अल्टीमेटली फोर्थ इन दोनों को सिंक करता है. कि चिल्ड्रन इन सेल्फ केयर इज द न्यू फ्रेज विच वी यूज टू रिप्लेस लाचकी. So I think students even fourth becomes the part of the paragraph. Fifth, although parents might believe that self-care would be beneficial for development, recent research has found quite the opposite. So even fifth says that self-care is not beneficial. So self-care के कुछ drawbacks हैं. So fifth actually talks about that. Now see students, which is the best answer? क्या लगता है which is the odd one? Yes, anyone? जितने भी students live हैं, if the people want to guess which is the odd one, आप सिर्फ इतना सा आइडेंटिफाई करो. और इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग द सीक्वेंस यू पीपल ट्राई टू गिव आंसर डायरेक्टली विच इज द ऑड वन. स्टूडेंट्स देखो, वन हो नहीं सकता, टू हो नहीं सकता, बिकॉज देखिए दिस बिकम्स द एसेंशियल पार्ट. अगर मैं लाचकी चिल्ड्रन कौन है ये नहीं बताऊंगा तो मेक्स नो सेंस. फोर्थ इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज हम इन दोनों को आपस में लिंक कर रहे हैं. एंड फिफ्थ सेज अगेन द नेगेटिव साइड ऑफ सेल्फ केयर. जबकि स्टूडेंट्स थर्ड ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है which is actually not highlighting the negative outcomes of self-care. It says that although generally points to negative outcomes, self-care को अपन negative outcomes लेकर चलते हैं, but still इसका जो long term consequences हैं उस पर रिसर्च होना बाकी है. The third option में the author seems to be not very much convinced that self-care refers to negative outcomes only or self-care will always have negative outcomes. So the author is cautious here, and the author says that long-term consequences को लेकर we will have to be extra careful. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स थर्ड का जो डायरेक्शन है, जो थीम है, वो थोड़ा सा आउट ऑफ द सिंक है. So I think students the better answer should be third one. Indeed, third is the right answer. So you people do agree with this? But ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, थोड़ा सा टफ था. यहाँ पर कंफ्यूजन का पूरा चांस है. बट मैंने जैसे बोला 1, 2 एंड 4 ये आपस में स्टूडेंट्स लिंक होते ही हैं. एंड फिफ्थ कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड की बात कर रहा है. जो सेल्फ केयर के फर्स्ट सेंटेंस में जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके साथ जेल होता है, जबकि थर्ड कहता है अभी तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पर रिसर्च होना बाकी है. तो ये एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है. इसीलिए स्टूडेंट्स माई करेक्ट आंसर इज थर्ड वन. चलिए अब इसका पूरा सीक्वेंस क्या होगा, आई वुड अप्रिशिएट अगर अपन कमेंट बॉक्स में बता सकें. एक और बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन कैट लेवल का. कैन एवरीवन गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन? चलो मैं सबको 30-40 सेकंड्स का टाइम देता हूं. ट्राई टू गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन. यस, कम ऑन. दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी. एब्सोल्युटली ये बहुत आसान नहीं है. एवरीवन जो भी लाइव हैं प्लीज ट्राई एंड गिव द आंसर. कम ऑन, थोड़ा सा इंटरैक्ट करो और मजा आएगा. एंड कल स्टूडेंट्स हम 11:30 पर स्नैप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. एनीवन हु इज सीरियस फॉर स्नैप डोंट मिस द लाइव. और अगले कुछ महीनों तक इस कैट को अपना साथी बना लो अपनी पूरी प्रिपरेशन में. Come on, all the students who are live, give the answer to this question, odd one out. Shall I give the answer now? Discuss करें इसको. चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स all the 5 sentences let us read it. Animals have an interest in fulfilling their basic needs, but also in avoiding suffering, and thus we ought to extend moral consideration. Second, Singer viewed himself as a utilitarian and presents a direct moral theory concerning animal rights, in contrast to indirect positions such as welfarist views. He argued for
extending moral consideration to animals because similar to humans, animals have certain significant interests. Fourth, the event that publicly announced animal rights as a legitimate issue within contemporary philosophy for Peter Singer's Animal Liberation text in 1975. Students, I think ये पूरा पैराग्राफ फोर्थ से स्टार्ट होना चाहिए, isn't it? ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है. The event that publicly announced animal rights as a legitimate issue within contemporary philosophy for Peter Singer's Animal Liberation text in 1975. So students, ये पूरा the event that publicly announced animal rights as a legitimate issue, okay, was, तो ये कब स्टार्ट हुआ, अंडरस्टैंड. तो फोर्थ टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है. फिफ्थ, as such we ought to view their interest alongside and equal to human interest, which results in humans having direct moral duties towards animals. ठीक है, तो फोर्थ से इसको स्टार्ट करते हैं. राइट, पीटर सिंगर का यहाँ पर रेफरेंस आता है. इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? तो सिंगर viewed himself as a utilitarian and presents a direct moral theory concerning animal rights in contrast to indirect positions such as welfarist views. I think 4 के बाद 2 लेना ज़्यादा suitable होगा. जो सिंगर को और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है, उसके ओपिनियन बताता है, अंडरस्टैंड. इसके बाद ओके 3 कहता है he argued for extending moral consideration to animals because similar to humans, animals have certain significant interests. फिफ्थ कहता है as such we ought to view their interest alongside and equal to human interest, which results in humans having direct moral duties towards animals. और स्टूडेंट्स 1 कहता है animals have an interest in fulfilling their basic needs but also in avoiding suffering. अब देखो, ये 3 सेंटेंसेस हैं और ये तीनों सेंटेंसेस कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पर बात कर रहे हैं. बट अगर आप थर्ड एंड फिफ्थ को कंपेयर करोगे तो स्टूडेंट्स पता चलेगा थर्ड एंड फिफ्थ एक कॉमन थीम पर चल रहे हैं. थर्ड एंड फिफ्थ हमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई एनिमल्स should have moral consideration. Okay, why humans should have direct moral duties towards animals. तो थर्ड एंड फिफ्थ एक ही बात कहते हैं. थर्ड एंड फिफ्थ कहते हैं कि जैसे ह्यूमंस के राइट्स होते हैं वैसे ही एनिमल्स के राइट्स होते हैं, एनिमल्स के इंटरेस्ट होते हैं, सॉरी, जैसे ह्यूमंस के इंटरेस्ट होते हैं वैसे एनिमल्स के इंटरेस्ट होते हैं. And as animals have also got their interests, that is the reason it becomes the duty of humans to give direct moral consideration towards animals. अब स्टूडेंट्स एक चीज समझना, थर्ड एंड फिफ्थ ये तो कहते हैं कि हमें डायरेक्ट मॉरल कंसिडरेशन क्यों देना चाहिए. व्हाई ह्यूमंस हैव डायरेक्ट मॉरल ड्यूटीज टुवर्ड्स एनिमल्स? बिकॉज दीज एनिमल्स हैव द इंटरेस्ट. हमारा इस पैराग्राफ को लिखने का मेन पर्पस ये है कि ह्यूमंस हैव गॉट डायरेक्ट मॉरल ड्यूटीज टुवर्ड्स एनिमल्स. और उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कि एनिमल्स हैव गॉट इंटरेस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमंस. बट यू पीपल अंडरस्टैंड, फर्स्ट कहता है कि आखिर एनिमल इंटरेस्ट है क्या. तो एनिमल का इंटरेस्ट है उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, इनका इंटरेस्ट होता है सफरिंग को अवॉइड करना, एंड thus we want to extend moral consideration. You people try to understand. हमने थर्ड एंड फिफ्थ में ये तो डिस्कस किया कि एनिमल्स के इंटरेस्ट होते हैं एंड देयरफॉर मॉरल कंसिडरेशन हैज टू बी एक्सटेंडेड. बट यहाँ पर स्टूडेंट्स एनिमल के इंटरेस्ट हैं क्या? बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, सफरिंग को अवॉइड करना. आई थिंक उनके इंटरेस्ट को डिस्कस करना कि व्हाट आर देयर इंटरेस्ट. I think students, that is not the theme of the paragraph. The theme of the paragraph is actually not कि आखिर एनिमल इंटरेस्ट है क्या. जो भी इंटरेस्ट होंगे, बट जिस तरह के ह्यूमंस के इंटरेस्ट होते हैं वैसे एनिमल्स के इंटरेस्ट होते हैं. एंड दैट इज द रीजन इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द ह्यूमंस कि हम डायरेक्ट मॉरल कंसिडरेशन दें एनिमल्स को. बट उनके इंटरेस्ट हैं क्या उसे डिस्कस करना इज एक्चुअली नॉट द पर्पस. एंड मोर ओवर स्टूडेंट, यू पीपल अंडरस्टैंड, अगर एनिमल्स के इंटरेस्ट इन दोनों की जगह कुछ और होता तो क्या हम उन्हें मॉरल कंसिडरेशन एक्सटेंड नहीं करते, या हम मॉरल कंसिडरेशन इसलिए एक्सटेंड कर रहे हैं बिकॉज देयर इंटरेस्ट लाइज इन फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स? नॉट एट ऑल. वॉट एवर देयर इंटरेस्ट आर, okay, but they do have some interest and therefore moral consideration has to be extended. तो इंटरेस्ट क्या है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है. इसीलिए स्टूडेंट बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है एंड वेरी सटल डिफरेंसेस दिया.
आई थिंक अगर कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल न्यूट्रली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे तो गलत आंसर आने के पूरे चांसेस हैं. बट एनीवे स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज इंडीड द करेक्ट आंसर एंड आई वांट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस पूरे पैराग्राफ को हमें सिंक्रोनाइज करना है. So which two options are going to come here? Do people find out the logical sense of the paragraph? But the odd one out is one. So students parajumbles को भी complete करते चलो and odd one out तो मैं बता ही चुका हूँ. So one becomes the best answer. Is it okay? Agreed? Yeah. Enjoy? Yes. No, one is the correct answer. I have given the reason for that. ओके आई गेस इस रीजन के साथ आप लोग एग्री करेंगे. इंटरेस्ट क्या है इस बात से फर्क नहीं पड़ता. अंडरस्टैंड इंटरेस्ट है दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू गेट मॉरल कंसिडरेशन फ्रॉम द ह्यूमंस. ओके 4 2 3 5. चलिए कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग वेरी गुड क्वेश्चन. एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज गिव द आंसर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. टॉपिक बहुत इजी है, पैराग्राफ समझ में आ जाएगा, बट गेटिंग द करेक्ट आंसर मे नॉट बी वेरी इजी. एंड इसके करेक्ट आंसर को लेकर आई हैव सीन डिफरेंसेस इन ओपिनियन ऑल्सो. हो सकता है जो आंसर मैं दूं यू पीपल मे नॉट एग्री विद दैट, पर ठीक है, आई विल गिव यू सम कन्विंसिंग रीजन ऑल्सो. होप सो आई कैन कन्विंस यू. करें इसको. ओवर द पास्ट फोर्टनाइट one of its finest champions managed to pull off a similar impression. So when I say a similar impression, possibility कि ये सेंटेंस किसी से कनेक्ट हो जाए, है ना, पॉसिबल है. तो सिमिलर, अ सिमिलर इंप्रेशन मतलब हमने कहीं पर कोई इंप्रेशन के बारे में बात कर रखी होगी. अंडरस्टैंड. Wimbledon's greatest illusion is the sense of timelessness it evokes. I think students second topic को इंट्रोड्यूस करता है कि विंबलडन्स ग्रेटेस्ट इल्यूजन. इतने साल बाद भी आप जब विंबलडन को देखते हो तो ऐसा लगता है कि इट इज टाइमलेस. अभी भी वही चीजें चल रही है जो 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी. तो इट इज एन इल्यूशन. इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा है, विंबलडन्स ग्रेटेस्ट इल्यूशन इज द सेंस ऑफ टाइमलेसनेस इट इवोक्स. गॉट इट? अब देखो. Over the past fortnight, one of its finest champions managed to pull off a similar impression. तो पॉसिबली स्टूडेंट्स अगर मैं कहता हूँ सिमिलर इंप्रेशन, तो ये जो इंप्रेशन था टाइमलेसनेस वाला, पॉसिबली ये उससे कनेक्ट हो सकता है. तो हो सकता है 2 and 1 आपस में जेल हो जाए. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट में हमने क्या लिखा, वन ऑफ इट्स फाइनेस्ट चैंपियंस. ओके, तो थर्ड जब मैं पढ़ता हूँ, at 35 years and 342 days, Roger Federer became the oldest man to win the singles title in the Open era, a full 14 years after he first claimed the title as a scruffy ponytailed upstart. So 14 years के बाद भी students he was playing and became the oldest man to win the singles title in the Open era. तो जब मैं कहता हूँ one of its finest champions, तो वो finest champion कौन है, रोजर फेडरर. तो मुझे लगता है थर्ड जो है ये भी स्टूडेंट्स इसके साथ सिंक होता है. अंडरस्टैंड. और ये टाइमलेस इसलिए है बिकॉज इवन आफ्टर 14 years दिस मैन इज विनिंग द टाइटल. व्हेन आई से टाइमलेस, ओके, आप देखोगे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में और स्पेशली लॉन टेनिस जैसे गेम में बहुत गजब का स्टैमिना चाहिए. रोजर फेडरर ने तो जिस एज तक इसको खेला है, दैट इटसेल्फ इज अ मिरेकल. अदरवाइज लॉन टेनिस के जो भी प्लेयर्स होते हैं ऑलमोस्ट लेट 20s में आते आते वो रिटायर होना स्टार्ट हो जाते हैं. अंडरस्टैंड. तो स्टूडेंट्स थर्ड वन आई गेस सिंक हो सकता है. फोर्थ, once he had survived the opening week, the second week witnessed a range of arrested Federer's genius. फोर्थ कहता है स्टूडेंट्स हम पर्टिकुलरली जिस टाइटल को रोजर फेडरर ने जीता है हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि फर्स्ट वीक में जैसे तैसे उसने सर्वाइव किया, बट सेकेंड वीक से उसका जो जीनियस है, देखिए, वो बाहर आना स्टार्ट हो गया.
तो सेकेंड वीक से उसका जो गेम है, ठीक है, दैट इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली। तो फोर्थ में वी आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग उस पर्टिकुलर टाइटल में, उस पर्टिकुलर विंबलडन में रोजर फेडरर का परफॉर्मेंस वीक वाइज कैसा रहा। फिफ्थ, given that his method isn't reliant on explosive athleticism or muscular ball striking, both vulnerable to decay. Yes, ये दोनों चीजें तो स्टूडेंट्स धीरे धीरे डीके हो जाती है। जैसे मस्कुलर बॉल स्ट्राइकिंग, एक्सप्लोसिव एथलेटिसिज्म, आप जितना ज्यादा विगर दोगे ना, या जितना ज्यादा आप शुरुआत में एक्सप्लोसिव रहोगे, आप धीरे धीरे डीके हो जाओगे। बट रोजर फेडरर की मेथड ऐसी नहीं है, एंड देयरफॉर द ऑथर प्रेडिक्ट्स there is cause to believe that Federer will continue to enchant for a while longer. तो ऐसा लगता है ये और लंबा चलेंगे। तो 14 इयर्स तो हो ही चुके हैं, पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये और लंबा चले, अंडरस्टैंड। जबकि फोर्थ कहता है स्टूडेंट्स इस विंबलडन में उनका परफॉर्मेंस वीक वाइज कैसा रहा। ओपनिंग वीक में सर्वाइव किया, बट उसके बाद सेकेंड वीक में हिज जीनियस केम आउट। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स 1, 2, 3 and 5 ये आपस में जेल होता है, एंड जो ऑड वन आउट होना चाहिए दैट इज द फोर्थ वन, बिकॉज फोर्थ में स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द इवेंट मोर आपके रादर दैन फॉलोइंग द थीम ऑफ द पैराग्राफ। So I will go with fourth option. I want your opinion. Are you convinced with this answer? Yes? Very good. So fourth indeed is the correct answer. Okay, coming on students, the fifth one. So 5 sentences related to a topic are given below. फिर से odd one out. 5 sentences are given. और फिफ्थ वाला भी बहुत ही अच्छा है, बट जैसा कि मैंने कल भी फिफ्थ क्वेश्चन को होम असाइनमेंट दिया था, आई वांट यू पीपल टू सॉल्व इट, एंड कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स आप मुझे बताओगे कि यस इसका आंसर क्या है। तो यू विल हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। इवन दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। यस, यू वांट मी टू गिव द आंसर? चलो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, और सबसे पहले यू पीपल ट्राई एंड गिव द आंसर। ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड एस्कैट पर लगातार बहुत सारा कंटेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आर देयर। DILR को लेकर बहुत सारी सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। क्वांट को लेकर अंकित सर की मैराथन क्लासेस चल रही है, एंड स्टूडेंट्स वीक में 4 to 5 डेज मेरे लाइव सेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। कल 11:30 पर हम लोग मिलेंगे और हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे स्नैप को। तो स्नैप की इंग्लिश पर देखिए 10 बहुत अच्छे क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व, एंड कल ओमेट्स पर हमारा मेन फोकस होगा। चलो, एनी क्वेश्चन फॉर अस? गुड। तो चलो, जितने भी स्टूडेंट्स देखें इसको, टीम को लाइक जरूर करो बेटा, जितना अप्रिशिएट करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। पर कई बार मैं बच्चों को देखता हूँ, दे हार्डली अप्रिशिएट। आई वांट यू पीपल खूब अप्रिशिएट करो। सिर्फ एस्कैट के वीडियोस लाइक करें ऐसा नहीं, जो अच्छा लगे कीप एक्सप्रेसिंग योर अप्रिसिएशन। ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो एट 11:30। Yes, अच्छा, can we do yesterday's? अच्छा, संजॉय, अच्छा के होमवर्क वाला जो क्वेश्चन था कल, पता नहीं वे संजॉय, सॉरी मैं वो क्वेश्चन अभी लेकर नहीं आया हूँ, बट इसकी आंसर की मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, उससे मैच कर लें, ठीक है? थैंक यू सो मच।